non-way platform back in 2020 just to create an awareness on the well-being and holistic well-being regarding your personal development and everything. So we strongly felt that people don't know, have no idea of well-being in Pakistan. That's why we started this platform. So as a speech language pathologist, I was friends with a lot of doctors in my master's platform, and Yeah. then so together the three strong mind started to recreated this नॉनवे प्लेटफॉर्म जिसमें हमने ये किया कि हमने एक डॉक्टर एक स्पीच थेरेपिस्ट और एक डेंटिस्ट हम तीनों ने मिलके एक नॉनवे प्लेटफॉर्म को एज ए बेबी हमने उसको बड़ा किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते रहे इंटरनेशनल न्यूरो साइंटिस्ट वी स्टार्टेड इंटरव्यूइंग देम so and then now alhamdulillah we have an online presence on which we call people from around the world to talk about their experiences and on how to take care of your mental, financial, spiritual, and emotional well-being. So that's what it is. And apart from that, I'm a speech therapist and I help people to uh, talk better, swallow better, and then express themselves. So that's what it That's lovely. Thank you so much, Misha, for sharing your, expertise. I'll just give you a little introduction about myself. My name is Rabia. I'm a clinical psychologist and I'm from Karachi. I'm also a mental health influencer because, I kind of resonate with the thing that you do because mental health awareness and, awareness regarding well-being, especially in Pakistan, is a stigma. And I think people like us who believe that this can happen, should kind of make it happen through anything and everything that we could do. So, hats off to you. That's amazing. Thank you so much. Thank you so much. So I'll be just I think so all of the guests have been joined, the chief guest also. Dr. Sahar Fazal, please open the camera and mic as well. hi, Dr. Sana is also Dr. here. Sana is also here, yeah. Welcome, ma'am. Yes. Ma'am, mute. Dr. Sana, please unmute. Hello, Assalamualaikum. Walaikum assalam. So basically, Dr. Sana, they are about asking our introduction. So over to you. या प्लीज़ इंट्रोड्यूस एज वेल सारों के अपना अपना शेयर कर दीजिएगा. Yes, I shall begin. I'm Dr. Sana Omer. I'm I've done my MBBS. I'm currently healthcare manager and co-founder of the Norway. The Norway founded with my husband, Mr. Irshad, and it is essentially a health and wellness effort that has for raising the awareness and the focus of mental health issues. डॉक्टर And सना प्लीज़ थोड़ा सा लाउड बोलिएगा. आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है. okay, you guys hear me now? Much better, yes. या बेटर. Yes, so the Norway is a health and wellness forum that advocates for the awareness and the conscious thinking about mental health issues as well as physical, emotional, psycho-spiritual. And we are a community and we raise awareness regarding all these issues. That's lovely. Thank you. Rabia Khan, you can start now. So, Assalamualaikum. I am just going to start this program. I hope I welcome all the ladies on the platform of JSCC. Today our topic is mental health, World Mental Health Day. So I would like to start from Ms. Rabia Khalid. She's a clinical psychologist. Dr. Sana Umar has also joined us. She's initiated masters. She's a master's in healthcare and also a very amazing mother. And next we have Miss Misha. She is a speech pathologist, the area which rarely established, and great to have you ma'am today with us. She's also a co-founder with Miss Dr. Sana. So our chief guest has also joined us, and so we have also Rabia Najeeb and Rabia Khalid. Let's start the show. My first question will be from Dr.
first question will be from Dr. Misha. Then I'll come to Yes. editors. So, Yes. Misha, G G. Misha, Yes, I'm listening. before I start, I would like to share our research that has recently published in U.S. journal. And according to this research, over 14 million adults in the U.S., almost 19.1 have an anxiety disorder, and approximately 70% of children aged 3 to 17 experience issues with anxiety each year. So most of the people develop symptom before age 21. So can you please tell us what at what stage we should realize that we should really see a doctor, because most of us face anxiety every day. We face stress, but we are unknown and unaware about this symptoms. So can you please tell us at what stage should we see a doctor? Thank you so much. Thank you so much for asking this question. First of all, I would like to अस्सलाम make वालेकुम clear मैम. that the time मैम आपका ये I कौन सी can आईडी से है, speak from my डोमेन तक? experience. That what because the amount of clients that I see, because mothers वो किया था लेकिन आप bring their सब हैं kids with इसमें, speech and हाय में language यहाँ सिर्फ delays, and आपका बेटा है. also mothers with the communication problems come. They also have these anxiety and mental health problems. So the first signs that हाँ we उसी पे आप I'm आई हैं, not मैंने आपकी ready आईडी to देखी है, label फिर आप that, गायब हो and गई then what हैं. are the signs that you need to keep. But there are certain symptoms that they express, that they have difficulty in relating to people, मैं and then दोबारा भेज sometimes रहा they हूँ just आपको. don't want to talk, and sometimes they just get breathless. So I just always recommend them, since I work in a multidisciplinary team. So I always refer them to my in-house psychologist, or a psychologist that जी आप देखें. I I personally go to, because as a therapist we also feel that anxiety is a real thing. It's more हाँ जी than हाँ जी, normal. So इसी I नंबर पे जिस पे also बात हो रही sometimes है. need professional help, because as a therapist, ठीक है. I also see people from different walks of life, especially mothers who are anxious, and by the end of the day, I'm also anxious. So these anxiety is already building up. सबके अंदर anxiety is just that the unprecedented times after COVID has ignited anxiety. Anxiety तो हर किसी का. तो मेरा जो आपका जो question था, that was very much related to the expert, but as an opinion of being related to much towards the field, I would like to address that you if you feel something like you need help, you you are more Yeah, than we will welcome to definitely reach out to a talk about psychologist. this question from our expert. But I would like you to start this answer so we can continue further. Yes, I just answered it that Can I as soon make as can I make a suggestion, please? ये yes. Can प्लीज़. all of us like unmute because the demand में कुछ distortion हो रही है. So we can like mute our mics so the one who's speaking we can hear him clearly. Sure, we can mute. Thank you. Thank you. So basically, as I was just saying, my answer is that you can take help as soon as possible. As soon as you see that you need, there is something wrong within yourself, or there's such an anxiety that you feel that you really need to talk to an expert, you should definitely go out. And then those signs, I will, since I also experience that sometimes I feel like breathless, or just not going to work, and think easier tasks are difficult for me. So that's how you need to reach out to an expert. So that's my answer for this question of yours. Is I hope this helped like anybody who's listening, and experts are already on this platform, so they can better highlight and give their input on it. Thank you from my side. अनम्यूट प्लीज़. Okay, so my second question is from Dr. Sana. रबिया खान प्लीज़ लाउड. Can you? Okay, my next question is from Ms. Rabia Najeeb, clinical psychologist. Hello. जी जी जी. Yes, I'm here. Please go ahead. So, Ms. Rabia, as Misha already speak about that we cannot even realize that when we are going through the phase of taking the treatment, so it becomes very difficult to understand
exact time, exact treatment, because I myself has suffered this anxiety, and I got it know when it was too far and I was unable to move, and then I realized I should see a neurologist because why I'm unable to move. So the neurologist, after treatments of weeks and months, my neurologist suggested me that you should see a psychologist. So I was totally unaware about it that I am going through this phase. So as an adult, we can all tell our problems, but when it comes to the children, because after COVID and the very studies, high and bad sort of studies which we are these days going through in our schools, a lot of books, a lot of this huge syllabus. So how can children be recognized that they are going through the mental stress? Okay, all right, sure. So सबसे पहले तो it's very actually important to understand that mental health basically is on a spectrum, right? So it's like everybody has mental health. You have mental health. I have mental health. Everybody has mental health, just like we have physical health. Now, according to the DSM, in adults, there are three certain criterias that you have to meet to be identified. As for your problem to be identified as a mental illness. So, for example, you will have to have problems in your social life, your personal life, or your occupational life. So it has to cause certain amount of disturbance in certain aspects in your life for a certain duration, right? For you to be diagnosed. And the same is with children. Now, yes, you're absolutely right that, it's very, very, essential for you to look at your kids and identify whether they have like a mental illness or a mental problem or not. Children obviously don't have that certain type of a language. So first of all, I think you need to give them that emotional vocabulary to basically, for them to actually tell you that, okay, mom, dad, there's something wrong with me, right? Because if you actually shut them down, because there are certain type of behaviors in children. I'm not really an expert in children. I mostly deal with adults. But as far as my experience is concerned, with children, the little experience that I have with children, first of all, you need to give them that language. So, shutting them off, telling them that no, nothing is wrong with you, it's all your fault, you're doing wrong, you're doing this, you're doing that. We kind of need to change our behavior and the kind of way we interact with our children for them to actually tell us, or for us to even open our eyes and see them through that lens that, okay, maybe it's not him, maybe there is something going on with my child, right? So, and like I said, according to the DSM, there's like a certain criteria given for each mental disorder, every mental problem, every mental illness. So, and until and unless you don't go see a professional, you don't seek a professional's help, you will not be able to diagnose your child with whatever problem that he or she may have. And this goes for adults also, to be very honest. Self diagnosis using Google is not at all helpful, because there's so many things that you see on the internet which is not really true, and you may not have those things, to be honest. That's the reason why professionals exist, because they know how to diagnose you. They know, they've studied like for extensive years, they've seen multiple clients. So yeah, I hope this answers your question. Okay, You're thank you on so mute. much. Thank you so much for answering this question. Now I would like to, if Dr. Sana is here. Dr. Sana, are you listening to me? Dr. Sana, in our society, it is almost a taboo to take psychological medicine. So, would you like to tell us that is there any awareness right these days about it, or people still feel that after taking the psychology after taking mental health treatment, we will be considered as psycho or something like that? What do you say about it? Hi, can you hear me first of all? I just want to make sure that I'm Yes, clear. yes, Okay. yes. Thank you for your question. Yes, that's a very important question because
definitely mental health is considered, uh, mental health issues are still considered a taboo. And there is a lot of awareness and a lot of attention that needs to be brought into raising and into accepting that mental health is as volatile and susceptible to illness as our physical health is. And the brain itself has a health makeup just like our body. So you're right that when it comes to reaching out for help, professional help, when it comes to accessing therapy and psychiatrists, generally in our part of the world, but I think this is a global phenomenon that people are hesitant and it's stigmatized, and one is considered to be outliers and not stable. And whereas I think that is not the case at all. Just like I said, our physical health is susceptible to illness, so is our mental health. And also, mental health illnesses are also triggered because of environmental stresses, just like our body is triggered into an illness because of an exposure to a virus. So one needs to access and another question that you asked, I think that is important to address it in this question, that when should one seek out this help? As soon as you feel, just like if we have a fever and we feel that we're having symptoms and our daily activities are being hampered and we're struggling, similarly, if you experience that mentally, emotionally, you are experiencing difficulty, you're struggling to carry out the normal daily activities and you are not functional like you'd like to be or you were, you should immediately seek out help. And there is no taboo, there is no shame, and it is something that should be acceptable and it is something that should be welcomed by everybody. But that is unfortunately not the case, and that is what we here at the Norway in our community do. We do very frequently touch upon this, that if you are struggling, if you're having problems, if you're feeling anxious, if you are, in any case, in any way that you're feeling troubled, please seek out for help. So that is my answer. ओके फर्स्ट आई वांट टू ऐड समथिंग दैट उर्दू में ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन भी साथ कर दिए, ताकि हमारे जो ऑडियंस होंगे आफ्टर द रिकॉर्डिंग तो उनके लिए ज़रा इजी हो अंडरस्टैंडिंग. सो नेक्स्ट रबिया खान, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए, उसके बाद उर्दू में प्लीज़ आंसर आए. ऑलराइट डॉक्टर सना, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग इसे जेनेटिक्स से एसोसिएट करते हैं कि मेंटल जी. हेल्थ इलनेस जो है वो आपको जेनेटिकली होती है, सो इसलिए मेडिकल साइंस क्या कहती है? Well, there is enough medical research that has been carried out to point that to the fact that genetics have a role to play. And if there is somebody in your family tree, like a parent, a sibling, or a second relative, there is a likelihood. But there is not enough evidence. In fact, there is not clear, compelling evidence at all that genetics are the only reason or the only factor. And there is enough compelling evidence that has been conducted which points to the fact that environmental stresses and stressful events in life have a strong role to play. So, I mean, my personal, I'm not an expert on psychiatry and mental illnesses, although I am keenly and deeply interested in, how they occur, the triggers, the prevalence. So, whatever I've read and whatever knowledge I have in my experience, I personally feel that our mind has a capacity, and it's like you can compare it to a balloon that you fill up the balloon to its maximum limit, and it will eventually pop. Just like that, if there is enough stress that is given to the mind and the body for that reason, there is going to come a point when the mind will break or will get affected at its weakest point. So if you're vulnerable genetically, if there is a gene in your body, in your DNA, which makes you susceptible because of a genetic linkage, yes. If your environmental uh, factors are contributing towards that susceptibility, then the likelihood that you will have some kind of a mental, health issue is very likely. और उर्दू में basically sorry normally um, just इसका जवाब ये होगा कि इट्स ओके. mental health issues I struggle with I mean मुझे उर्दू बहुत अच्छी आती आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम.
So please, I think Rabia, Khalid, you can continue. Okay, so राबिया आप अपना माइक ऑफ कर दोगी प्लीज उसमें थोड़ी वो आवाज पर क्लियर नहीं आती है आपका माइक ऑफ है Okay, so I wanted to add on what Sana was saying. Was saying, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी होती है certain चीजें bear करने की. So I want to add it's the brain and it's the body too. So whatever we experience is stored in our body. It can be like our bad experiences or good experiences, and a time comes that our body can't take it anymore. And I also think that physically a lot of physical ailments are because of the environmental stresses. So we are building them up. Like it can be like anxiety, stress, depression, और वो एक टाइम आता है कि अब our body can't take it anymore. So हमारी functionality उससे affect होती है. So that's what I wanted to add to what Sana said. Thank you. I think that was very helpful. Thank you. Yeah. So Rabia, Najeeb, Yes. what about the behavioral concerns? Sorry, I got disconnected बीच में थोड़ा सा. Could you please repeat that for me? मैं पूछ रहा हूँ कि जो हमारे बिहेवियल कंसर्न्स हैं, लाइक हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं मेन एंड वुमेन, और उसमें जैसा कि आपने थोड़ा सा चाइल्डहुड को भी कवर किया इन योर प्रीवियस एड्रेस. सो ये मैं लेकिन बिकॉज अब इस वक्त हमारा थोड़ा सा फोकस अडल्ट की तरफ भी है, तो हमारे यहाँ दिस अ कॉमन प्रॉब्लम, द स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे Absolutely. आप रोड पे निकलते हैं, आपको कुछ ऐसा नज़र आ जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेसफुल एलिमेंट. इसके अलावा जो आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, आप किसी जॉब में हैं, कहीं में भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो इसमें जो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर का है, यानी आई मीन द रिएक्शन व्हेन वी गेट समथिंग लाइक कि आपको कोई बात नहीं अच्छी लग रही है, एंड यू सम पीपल एब्जॉर्ब, दे कैन एब्जॉर्ब बट सम रिएक्ट, और उसकी वजह से आई थिंक इन स्पेशली रिलेशनशिप हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो हम उस रिएक्शन को बाद में समटाइम रिग्रेट करते हैं बट समटाइम नहीं. सो व्हाट यू फील कि हम इस चीज़ को कैसे इस पे काम किया जाए? आई थिंक देर आर लॉट ऑफ थेरेपिस्ट वर्किंग ऑन डैट. हमारे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, लाइक आई एम इन अब्रॉड, यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट स्टिल देर इज़ अ ह्यूज गैप. ऑल दो साइकोलॉजी में बहुत काम हो गया, और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो मेरा मेजर जो पर्पस था ये मनाने का, वो यही था कि स्टिल देर इज़ अ सर्टन बैरियर्स कि उनके ऊपर एड्रेस मेरे ख्याल में अभी नहीं किया जा रहा उस तरह से. सो एक तो ये कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता क्या है एंड वाई पीपल डू डैट, और उसमें क्या कोई ऐसी हमारे हाइपोथेटिकली और हमारे इसमें जो नर्वस सिस्टम है, दे हैव सम स्टिमुलस लाइक, और जैसे जेनेटिकली डॉक्टर सना ने भी थोड़ा सा कवर किया, तो ये क्या हमारे इनबॉर्न से चल रहा होता है या हम एनवायरनमेंट से हो कि इतना वो क्रूड हो जाते हैं कि फिर हम किसी Yeah. चीज़ का लिहाज नहीं करते? Very, very good point. Okay, so first of all, सबसे पहले अली ये चीज़ recognize हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है that we have to. You're right. We have to start somewhere, and for me, I think personally we should start with our own selves because we all go through certain ups and downs in life, right? And we also don't have that certain kind of हमारे घरों में भी हमारे हमारे environment में भी obviously growing up हमें यही बताया जाता कि this is this is a stigma, this is for a certain type of people and stuff like that. I remember when I was actually getting into clinical psychology, my parents told me, no, please become anything else, do not become a clinical psychologist, because they thought it's very dangerous, they thought it's not something that I will be able to cope up with and stuff like that. So I think we should actually start within ourselves, from ourselves, because whenever even we travel, whenever in an airplane, right, the air hostess tells you that in an emergency situation, when the masks drop, you're supposed to put it on yourself rather and then help the other Yeah, person, yeah, right? So even in this situation, you kind of have to help yourself first and then help the other people, and then many other people like that. Another thing you really you mentioned about whether this is all environmental, whether this is genetic, yeah. what is it, right? So the recent study of epigenetics actually suggests that yes, you can share like a certain type of DNA with your parents,
or with your offsprings, your bloodline basically, but that DNA can be altered by your choices and your experiences and the things that you want to do for yourself. So, for example, if my mother, for example, is going through depression, does not necessarily mean that I also go through depression. I just need to have make some lifestyle changes, some choices in my life that actually does not make me susceptible to that illness. uh, and एक आपने बात की हमारी impulsive behavior की, जो हम जो है acting out जो behavior होता जी है, and वो I think हमारी society में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, especially when it comes to males, because उनका जो है वो अच्छा, ये बहुत ही एक understand करने की बहुत ज़रूरत है कि what is the difference between how do males in most cases, I'm not generalizing this, please don't take it as that, but I'm just saying in most cases basically how men and women actually take in feelings. So women take it upon themselves in most cases, तो वो inward हो जाती है आपकी, and they start blaming themselves, उनको loneliness feel होती है, self esteem आपकी affect होती है, and then for men it's like outward, right? Their behavior is basically reflected outward. Now when it comes to impulsivity, anger, all of these things, they all have certain other emotions attached to them. So for example, if a certain person is angry, जिस तरह से आपने कहा रोड पे निकल के like लोग act out करते हैं, इस तरह की चीजें हम देखने को बहुत मिलती हैं. So it's not because the person is like that, it's basically the person is expressing certain kind of emotions through their anger. So उन emotions को channelize करने की I think बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. I think हमें especially मर्दों को एक emotional vocabulary देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, because they don't know how to excellent express yeah themselves. So anger is the only thing that they think is the best way to let out their emotions, which is not really the case. And with women, I think we should really teach them and empower them and kind of do some inside work, in the sense that they don't self blame themselves for everything that happens yeah to them. So I think these kind of things are very important to cater in the society. Yeah, I very hope that nice, answers your very question. nice. So, Dr. Sana, how you feel that because you are also a medical doctor and then you become in this area, so अब आप क्या समझती हैं? I don't know, I'm not asking in a pure psychiatric or clinical aspect, but generally in what you जी say कि हमारे कुछ जैसा कि राबिया नजीब ने इस पे कवर दिया कि समटाइम हमारे इन्वायरमेंटल और ये फैक्टर्स तो बिल्कुल होते ही होते हैं, बट इसके साथ साथ हमारे इन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू लाइक इफ़ यू आर पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन और लाइक दैट, सो वो भी इफेक्ट होता है हमारे मेंटल हेल्थ पे और वो एग्जेजरेट हो जी जाती है हमारी बिहेवियरल कंसर्न में. सो इज़ देयर एनी काइंड ऑफ स्पेशल लाइक सिनेरियो कि जिसमें हम अपने ऊपर काम करें, लाइक सोने से पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम अपनी बिहेवियर के स्पॉन्टेनियस बिहेवियर पे काम कर सकते हैं, या सुबह उठने के बाद, या कोई ऐसी कोई चीज़ जिस पे हम अपने आप को जो है वो मज़ीद टॉलरेंस की तरफ लाएं. जी दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है. और जैसे डॉक्टर राबिया ने कहा कि सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो आता है एहसास जिम्मेदारी का, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वन सेल्फ. अगर एक इंसान ये एहसास ही नहीं कर रहा कि या कर रही कि मुझ में कोई मसला है, ये जो मैं कर रहा हूँ या मैंने किया, अगर आपने रोड रेज की बात की, तो ये जो मैं करता आ रहा हूँ या हो जाता है, शी वाज राइट कि कोई जानबूझ के नहीं करता, ये वो मोमेंट ऑफ वीकनेस होती है, वल्नरेबिलिटी, जहां आप ट्रिगर होते हैं. पहली चीज है आपका, हाँ, जैसे आपने ब्लड प्रेशर, मैं जरा इसको साइड पे रखूंगी, मैं एक आम इंसान की बात करूंगी, ठीक है. जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स. एक रोड रेज का इंसिडेंस ले लें, एक आम इंसान जो हर दूसरे दिन ट्रैफिक ज्यादा या होने के बाद बाहर निकल के लड़ते हैं, बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, हम आदमियों का. अगेन नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, बट लाइक डॉक्टर राबिया, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मैन अपने आप को अग्रेशन और एंगर से ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं. इसका आई फ्रॉम व्हाट आई नो एंड आई बिलीव इन, इसका ताल्लुक आदमियों की सिर्फ बायोलॉजी से नहीं है, इसका सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट से भी है कि उनकी किस किस्म की अपब्रिंगिंग होती है, कंडीशनिंग होती है. हमारी सोसाइटी में इट्स ओके कि आदमी गुस्सा करता है, अग्रेशन करता है, निकल के चिल्लाता है. औरत नहीं कर सकती, औरत दबी हुई थोड़ी हमारी सोसाइटी में
रेज होती है, इसलिए ये रिस्पॉन्सेज आदमियों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक आदमी जिसको पता है कि मैं करता हूँ, अगर उसको ये एहसास ही नहीं है और कोई एहसास दिलाने वाला नहीं है, तो उनका तो अगर यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सेकेंडली, अगर आपने एहसास कर लिया, जैसे यहाँ राबिया सेड कि मैं एंजाइटी थी, आई थी बिल्कुल, अगर आपने अपने सिम्टम्स रिकग्नाइज कर लिए एंड यू आर फीलिंग कि यू नो व्हाट आई एम डूइंग, it's not only affecting me, I don't feel good after I've done that, after I've been rageful, after aggression. I also don't want to do it to other people and I want to fix myself. मुझे ठीक करना है। तो बहुत चीजें हैं, आप हेल्प सीक आउट थेरेपी। आप थेरेपी में ये फायदा है कि आपको बैठ के बताया जाता है, यू आर एबल टू एक्सप्लोर अपनी पूरी लाइफ, चाइल्डहुड कहाँ से आ रही, क्या आपके माँ बाप, आपके घर का ये या माहौल था, क्या आप में से कोई एक पेरेंट ने आपको इस तरह रेज किया है, क्या आपकी ऐसी कंडीशनिंग होगी या आपके लिए ओके है। और तीसरी चीज, यस, कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अदर देन थेरेपी, प्रोफेशनल हेल्प खुद के लिए। पहली बात है एक इंटरनल डायलॉग, आप बैठ के अपने आप से बात करेंगे और आप अपने आप को डेली बेसिस पे कहेंगे कि ये जो मेरा गुस्सा आता है जल्दी, मुझे इस पे काबू पाना है। So, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ रिफ्लेक्शन। नंबर टू, देन देयर आर टूल्स दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ। कुछ चीजें हैं, स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। उनमें एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। रिसर्च has proven that the amount of serotonin, dopamine release, जो कि हमारे ह्यूमन माइंड के दो स्ट्रॉन्ग बहुत पोटेंट केमिकल्स हैं that make us feel good, the amount of these neurotransmitters that are released by the brain and in the form of exercise, वो किसी stimulant, किसी क्लास के ड्रग से भी, ड्रग अब्यूज से भी नहीं होते। इट्स लाइक अ कॉकटेल। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, डॉक्टर सना, योर नेट I think Dr. प्रॉब्लम, Sana या प्लीज। got disconnected, but I would actually really agree with what Dr. Sana said in the sense that exercise is one of the most essential things that one person can incorporate in their daily routines. I think Dr. Sana is back, so she can take over. या Dr. Sana, you're on mute. सना, माइक प्लीज। बता दूं अभी अनम्यूट मेरे अनम्यूट इंटरनेट प्लीज। कनेक्शन या बहुत बुरा है, तो आई एम कॉन्स्टेंटली डिस्कनेक्टिंग। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप फिजिकल एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, उसके अलावा आप कुछ मेडिटेशन, नमाज हमारे रिलीजन में और इन एनी रिलीजन, और ऐसी प्रैक्टिसेस, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप थोड़ा ज़बरदस्त। क्वाइट टाइम में आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जहां आप अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू टेकिंग डीप ब्रेथ्स, यू क्लोजिंग योर आईज। इफ देयर इज एन अनप्लेजेंट इंसिडेंट, you revisit that, you try and replay it and say, how could I make it different? What could I have done? Then there are, you can fix your diet. अगर आपकी ऐसी diet है, जैसे high carb diet है, जो, it's not good, कि high carb diet जो है वो भी हमारे brain chemical imbalance को बहुत affect करती है। आप अपनी diet clean करें, आप अपना green tea पी लें, chamomile tea। मगर मेरे ख्याल से जो दो चीजें बहुत important है, which I feel are the only solutions. A is self acceptance, self reflection, self realization that you have a problem. B is to reach out for help. And three, yes, I think you should incorporate some form of exercise and meditation and, yeah, and talking to people also. ये बहुत जरूरी है, आपके दोस्त, आपके family members जिनसे आप share करें। And yes, Like support support system system is is required. required. Like you need Support to have a system support बहुत system. जरूरी है, yes. और अनफॉर्चुनेटली एक और चीज आई वांट टू से कि हमारे यहाँ मर्दों को वो सपोर्ट सिस्टम तो है, उनको ऊपर करने के लिए, शाबाशियां देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं घर वाले, मगर जब उनको क्रिटिसाइज की बात आती है, men are very averse to criticism. It's not their fault, it's not their genetic makeup, it is their conditioning, it is how they're raised, they don't take well to it. तो उनको घर वाले, माँ बाप, बीवी, बहन भाई समझाएं कि देखिए कोई मसला नहीं है, आपकी ये प्रॉब्लम है, ये हल हो सकता है, हम हैं इधर आपके लिए, इफ यू नीड हेल्प टॉक टू अस। ये भी एक है कि आदमी डिस्कस नहीं करते अपनी प्रॉब्लम। वेरी दैट्स इंपॉर्टेंट। दैट। One thing I'd also like to add, you're absolutely right about that. And one thing also is very, very essential to understand is that जब आपके आपको अंडरस्टैंड जब आपके इमोशंस होते हैं, अच्छे इमोशंस होते हैं, हैप्पी इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ आपके बुरे इमोशंस भी होते हैं, एंड यू गो थ्रू बोथ ऑफ दोस every day,
every now and then. So you need to kind of understand and you need to kind of realize that you will go through these emotions, and it's not an alien feeling or should not be an alien feeling, or it's just not happening to you. It's happening to everybody else around you in this entire world. So it's very, very essential to actually reflect that, yes, I will go through these emotions, and let yourself go through this pain. Because, a lot of people actually ask me, give me a quick solution, give me a quick solution. I want a quick solution. There's no quick solution to this. Honestly speaking, it's just a way of the life, to be very honest. Yeah, very nice, very nice. Misha, please, I would like to ask about कि जैसा कि आपका स्पीच के ऊपर बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, सो सबसे पहले तो बताइएगा व्हेन वी कम्युनिकेट, और उसमें हम किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, सो वी हैव डिफरेंट लाइक हमने अपने टीचर से करना है, हमने अपने स्टूडेंट से करना है, हमने अपने स्टडी में, सो कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्दो इज़ अ काइंड ऑफ समथिंग डिफरेंट, बट स्टिल यू वट यू फील कि हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन और हमारा वे ऑफ टॉकिंग स्पेशली, क्या वो इस हद तक इन्फ्लुएंस करता है कि हम अपने जो व्हाट वी वांट टू से, जो हमारा मीनिंग है, हम उस तक अगले को समझा सकें? और इसके अलावा आप क्या समझती हैं, अगर कोई समझता है कि उसकी स्पीच या और उसके बोलने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, सो हाउ ही और शी कैन हैंडल? So much for asking question. पहली तो बात है, आपने तीन मुझसे अलग अलग questions किए, so I will break it down and answer it one by one because बहुत सारा जबड़लक हो जाएगा. सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि emotions, yes, they play a very good part, like huge role in our communication. because जब हम खुश होके बात करते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट रख के बात करते हैं, तो अगला भी हमारी बात सुनना चाहता है. या एक हम अंग्रेजी में वर्ड आता है empathy, जिसको सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक आप समझें और एक दूसरे सिंपैथाइज किसी को करने के मतलब कि अगले को आप एक मतलब हमदर्दी जता रहे हैं, तो एक को समझना और एक हमदर्दी जताना एक बहुत बड़ी फाइन लाइन है इसके दरमियान में. और कम्युनिकेशन, being a communication expert, I have learned that human behavior is motivated by pain and pleasure. तो पेन एंड प्लेजर को देखते देखते ना आपको देखना पड़ता है कि जब आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी सिनेरियो में हो, तो आप देखिए कि क्या आपके तीन फिल्टर गेट्स के थ्रू आपके वर्ड्स आने चाहिए. इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड, और विल इट ऐड वैल्यू टू दैट सिचुएशन. सो ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखते साथ ही आंसर करना चाहिए. और डे मैं जब लोगों से बात करती हूँ, जब लोग मेरे पास आते हैं, तो लैंग्वेज की 5 मोडालिटीज हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड जेस्चरिंग. लेकिन लोग जो है ना, रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादातर आजकल हमारी एकेडमिक गेम चल रही है, बच्चों को भी वही सिखाते हैं. सुनना और बोलना तो आज तक किसी स्कूल में सिखाया ही नहीं गया. सही बात है. Absolutely agree with that. Absolutely agree. so so basically, that's what the Norway is about, that we talk on different social aspects of our community. The ugly truth, जिसको हम अपने कहते हैं कि सच जो है हमेशा कड़वा होता है, तो हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं. कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इमोशन, लाइक आपके सवाल का एक ही जुमले में आंसर, इमोशंस बहुत जरूरी है. और आवाज को धीमे लहजे में और आराम आराम से बात करना भी एक आपका जो है एक जोर लगता है. आपकी चीज, आपको किसी चीज पे कबूल आ एक जाती स्किल है है. लिटरली. एक स्किल है बेसिकली. उर्दू में वर्ड फाइंड, इट्स अ स्ट्रगल फॉर मी टू आई टॉक नो. उर्दू because I हुनर है, understand हुनर. definitions in English, because code switch is a very difficult thing for me, because as a speech language therapist I'm a fluent in Punjabi and I'm fluent in English. But when it comes to code switch in Urdu, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू इवन कम्युनिकेट. इवन आपके जो जब आपके पास वर्ड्स नहीं होते ना, तो अच्छा किया आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं उर्दू में अपनी बात समझा सकूं. बहुत सारी चीजें तब भी होती हैं जब आपके पास वोकैबुलरी नहीं होती है. या वोकैबुलरी या नहीं होती है, उस पे भी ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, हम अग्रेसिव हो जाते हैं. अब जब आपका दूसरा सवाल था कि जो बच्चे आते हैं वो अपने आप को किस तरह, बेसिकली मेरे पास जितने बच्चे आते हैं वो कम्युनिकेशन क्या है कि लाइक एनी बैड बिहेवियर हैपेंस व्हेन यू हैव लिमिटेड वोकैबुलरी. जब बच्चे के पास वोकैबुलरी होगी, हम देखते हैं वो टैंट्रम्स हो करता है. इसी तरह बड़ों के पास भी, जिनके पास जी जी. इमोशंस नहीं होते और उनको पता नहीं होता वो इमोशन उसका राइट वर्ड क्या, जितना अभी डॉक्टर राबिया ने बोला
कि मर्दों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनको कभी ऐसे जैसे डॉक्टर सना ने भी बोला कि हमारे मुआशरे में, लेकिन उनको कभी वो एम्पैथी वाले वर्ड सिखाए ही नहीं गए हैं कि आपको किस तरह एक्सप्रेस करना है। इट्स जस्ट दैट कमिंग बैक टू व्हाटएवर डॉक्टर सना सेड, इट्स नॉट कंडीशनड, और वो राइट वर्ड्स जब आपको अल्फाज मिल जाते हैं ना, तब आप रोते कम हो और आप उस चीज को एक्सप्रेस ज्यादा कर पाते हो। सिमिलरली व्हेन वी वर यंग, तो हमारे पास जिस सिचुएशन के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसके रिलेटेड अल्फाज नहीं थे, तो हम रो देते थे या किसी तरह सिचुएशन को डील कर। लेकिन आज जब हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट जस्ट बिकॉज Yeah. हमारे पास इतने वो जो हमारे ब्रेन के अंदर जो डॉट्स बन जाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके न्यूरोलॉजिकल सर्कल बनता है, जितना भी हम इंफॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लें, वो बढ़ता जाता है, एंड देन वी बिकम मोर नॉलेजेबल अबाउट इट। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आपका थोड़ा सा मैं थोड़ा ट्रैक हो गई, वो क्या था, आप मुझे दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैंने कहा था कि जो हमारा कम्युनिकेशन के अलावा जो अफेक्ट है, कि अगर कोई किसी को समझता है कि मेरी बात या मेरे बोलने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि अगले को गलत समझ आती है, अगर गलत समझता है तो उसको क्या करना चाहिए अपने आप के ऊपर? तो उसको ये करना चाहिए कि उसको पहले तो बात है, ही शुड रीच आउट टू अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एट द सेम point in time, he should get his speech pattern evaluated in order to see that what makes me what motivates my behavior and what makes me angry, what makes me sad, and I should monitor my rate of speech because emotions play a huge role. एक होता है कि इमोशनल रेगुलेशन, जिसपे आजकल हम छोटे बच्चों में भी बहुत काम कर रहे हैं, जिस तरह ऑटिज्म, एडीएचडी, जितनी जी भी जी जी। न्यूरोटिपिकल डिजीजेस बढ़ रही हैं, बच्चों के कम्युनिकेशन पे हम काम, सबसे बड़ा चीज इमोशंस पे उनके साथ काम कर रहे हैं कि द मोर रेगुलेटेड यू आर, हम रोते क्यों है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही, हम अपने इमोशंस को जितना कंट्रोल करेंगे, जितना समझेंगे, जितना उस सिचुएशन को समझेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए आसानियां होती हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात पे अपना बस एंड करूंगी अपना आंसर, कि जब हमारे पास आई लव हाउ न्यूरोटिपिकल माइंड्स वर्क, जो एक होता है टिपिकल माइंडसेट, एक होता है न्यूरोटिपिकल, जो न्यूरो डाइवर्स मेरे पास बच्चे आते हैं, हर चीज उनको ना जितना सोशल स्किल्स में, जैसे बाहर भाग के नहीं जाना, इधर अगर माँ के मुंह पे दरवाजा नहीं बंद करना, तो वो हम हर चीज उनको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे होते हैं, एंड वंस जब उनको समझ आ जाती है, दे आर मैजिकली दे आर चेंज ह्यूमन या बीइंग, या उनका entire बिहेवियर बदल जाता है, एंड देन उनकी बात करने का तरीका बदल जाता है। तो इसी वजह से हर चीज को सिखाया जा सकता है, और मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट कि आप इस चीज को, एज डॉक्टर सना हैज सेड, कि आप इसको शुरू में ही टारगेट कर लो, खांसी नजला जुकाम में जिस तरह हम पैनाडोल लेते हैं, सो बेसिकली इट्स बेटर टू रीच आउट टू ऑल द प्रोफेशनल्स। Yeah, thank you so much. So now I would like to ask our chief guest, Dr. Sahar Fazal, Dean, Faculty of Health and Life Sciences, Capital University Science and Technology. Honor, ma'am, to have you. Please open the camera. Dr. Sahar is my teacher as well. और इनका बहुत एक्सपीरियंस है सेशंस करवाना और सेमिनार्स करवाना, ये उन्हीं की ट्रेनिंग है कि आज मैं यहाँ बैठ के ये कर रहा हूँ। थैंक यू फरहान एंड अदर रिस्पेक्टेड गेस्ट जो इस हमारी कन्वर्सेशन में हैं। आई रियली लाइक दिस कन्वर्सेशन और मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है इसमें। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है? इज इट? जी जी जी, बिल्कुल जी जी क्लियर। बिल्कुल क्लियर। एंड आई रियली एंजॉयड द डिस्कशन आप लोग जो कर रहे थे, बट आई मतलब बिफोर गोइंग टू अदर थिंग्स आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस विद डॉक्टर मिशर, राबिया एंड सना। अभी आप लोग बात कर रहे थे जैसे कि हमारी सोसाइटी में मेल्स दे कैन एक्सप्रेस इन एनी वे, किसी भी किस्म की मेंटल इश्यूज हैं दे कैन एक्सप्रेस, बट व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड द फीमेल्स वी आर बीइंग केप्ट सप्रेस्ड। अगर आप मोस्ट केसेस में देखें, और आई एम आल्सो अ वर्किंग वुमन एंड आई हैव सीन मैनी केसेस कि आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट का प्रेशर है, अदर देन आपने घर को भी देखना है। एंड अगर हम अपनी सोसाइटी में ये देखें कि देयर आर इन मोस्ट केसेस फीमेल्स आर सफरिंग मोर फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर्स एज कंपेयर टू द मेल्स, बिकॉज नो वन इज हियर टू लिसन दैम। तो सबसे बड़ा इशू फीमेल्स में आता है। और मेरे पास भी अक्सर जो एज अरीफ खान सेड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सी बच्चियां मेरे पास आती हैं, दे यूज्ड टू शेयर, बट इन सच सिचुएशंस मुझे नहीं समझ में आता हाउ डू दे रिस्पॉन्ड कि मेल ही और वो जब मार्केट में जाता है ही कैन शो द एग्रेशन इवन इन द फैमिली। वो फीमेल्स पे हाथ उठा के एग्रेशन शो कर सकता है अपने डिप्रेशन को इन एनी वेज, ही हैज मैनी वेज, बट फीमेल शी कांट। और इफ यू डोंट माइंड, मतलब मैं थोड़ा सा जैसे टिपिकली हमारे जो आउटस्कर्ट्स हैं, टाउन्स हैं और विलेजेस हैं, और particularly KPK areas में we do have the students from those areas and I have seen those situations
in which they have different kind of mental disorders, and this is just because of this environment they are unable to express what they are feeling and what kind of problems they do have. The other thing is that Mission said that nowadays we are giving a training to the students reading, and most of the cases what I have feel कि हम उनको communication तो सिखा रहे हैं, but listening जो मेरी अपनी personal feeling है, they don't have the habit of listening what the other person is suffering. मेरी अपनी बेटी पढ़ती है, and most of the time we do have discussion. She used to talk about कि मेरी फलां friend के साथ ये issue है, yeah, she is misbehaving. Then I used to tell her that discuss with her what kind of problem does she has. तो इस तरह की सिचुएशन में ना हमारे पास एक लिसनिंग जो एक ईयर होता है वो भी नहीं है। इवन छोटे बच्चों में अगर आप देख लें तो कोई नहीं, बल्कि दे यूज टू बुले हर, और या जो भी बच्चा उसको बुलिंग करते हैं, ये इस तरह की सिचुएशन है। इवन आप वर्किंग एनवायरनमेंट में जाएं तो देयर इज एवरीवन, अगर आपका बॉस है तो वो चाहते हैं कि आप उसकी सुने, और अदर देन दिस, तो ये सारे प्रेशर्स जो हैं वो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमें अगर अच्छी लिसनिंग भी मिल जाए, अगर एक ऐसा शोल्डर जो हमें अंडरस्टैंड कर सकता हो, कोई भी एक हो सकता है। बट इशू ये आता है कि जल्दिया हमारे अंदर जल्दिया। सोसाइटी में ये फियर्स भी आल्सो एग्जिस्ट कि दे पीपल स्टार्ट ब्लैकमेलिंग इफ समवन इज गोइंग टू द साइकियाट्रिस्ट। ये मेरा पर्सनल लोगों का एक्सपीरियंस भी है, हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग थे। दिस मेरी कोलीग्स में शी इज गोइंग टू द साइकियाट्रिस्ट, एंड पीपल एट हर वर्किंग प्लेस स्टार्टेड टू कॉल हर साइको, एंड she has mental issues, and kind of word pagal, कि she is not reliable or some these things. तो जो हमारी मतलब नो डाउट दिस इज वेरी गुड वी आर, एंड आई आल्सो अप्रिशिएट एंड आई रियली लाइक टू इंटरेक्ट विद सच पीपल जो खासतौर पे मेंटल डिसऑर्डर्स में, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू सोसाइटी में है वो यही है। और इसमें सबसे ज्यादा पता नहीं आप एग्री करेंगे या नहीं, इंट्रोवर्ट्स पीपल आर सफरिंग मोर एज कम्पेयर टू एक्सट्रोवर्ट्स, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स को वैसे ही एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करनी आती है अपनी फीलिंग्स, और इफ यू ट्राई टू let them trust you, they have different kinds of fears. तो मेरा बस यही कंसर्न था कि हमारे यहाँ why we are इस फॉरम पे we all we are females, बट हमने कभी अपनी फीमेल्स के लिए मतलब इसमें आई एम नॉट लाइक दैट कि आई एम अपोजिंग द मैन और आई एम जस्ट फेवरिंग द फीमेल, बट क्योंकि मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और मेरा इंटरेक्शन भी मतलब बॉयज के साथ भी है, को एजुकेशन पढ़ा रही हूँ, बट व्हाट डिड आई फील मतलब इस पूरे एक्सपीरियंस में कि हमारी फीमेल्स जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या अदर देन सोसाइटी में मेरी अपनी सराउंडिंग्स में जो फीमेल्स हैं, उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम है और मेंटल इश्यू हो सकता है। जैसे अभी आपने कहा वो दैट इज वेरी गुड थिंग कि हम अपनी फीडिंग हैबिट से जिसे हम आजकल एपिजेनेटिक्स कहते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल से एक्सरसाइज से इन चीज़ों से अपने, बट देयर मस्ट बी समथिंग जो उस फीमेल को ये बताए कि आपके साथ कोई इशू है एंड उस इशू को आपने कैसे रिजॉल्व करना है। हमारे यहाँ इस तरह के अवेयरनेस की कैंपेन्स नहीं है पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए। तो आप लोग तो डेफिनेटली इस प्रोफेशन में हैं, तो क्या ऐसे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि मैं आई डिड नॉट कम अक्रॉस सच प्लेटफॉर्म्स जिन पे इस तरह का कोई काम हो रहा हो या इस तरह की चीजें हैं और हो भी रही होंगी, बट इट्स नॉट ऑन अ वाइडर स्केल। Ma'am, Sahar, can I just, first of all, very happy to have met you here. And ये जो आपने बातें शेयर की बिल्कुल ठीक है। आपने जो लास्ट बात की कि ऐसी आप प्लीज हमारा ये द नॉन वे प्लेटफॉर्म जरूर देखिएगा, बिकॉज आई थिंक हम इसलिए वेरी हम्बली बट आई कैन मेक द क्लेम मी एंड मीशा के हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट इसलिए किया कि जैसे आपने कहा फीमेल्स के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं है, तो वी हियर एट द नॉन वे दैट इज एन एंडेवर टू डू दैट। और अगर आप हमारी टॉक्स देखें तो हमने बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत हार्ड रियलिटीज फॉर वुमेन पे बात की है। हमने डोमेस्टिक अब्यूज, हमने इमोशनल साइको इमोशनल इश्यूज, हमने अपनी आवाज उठाने के बारे में। तो ये जो आप बातें बोल रही हैं, बट यू आर राइट, आई एग्री कि इसकी बहुत जरूरत है और हम औरतों को ही आगे बढ़कर इस पे काम करना पड़ेगा। One more thing I'd like to add here is that मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपने जो भी कहा it was absolutely relevant.
But one more thing I'd actually like to say is that, um, जिस तरह से हमने बात की कि मर्दों को इमोशनल वोकैबुलरी देनी चाहिए, आई थिंक हमें अपने घरों में ही अपनी लड़कियों को वो वोकैबुलरी देनी चाहिए कि दे शुड बी एबल टू स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स। उनको उस लेवल पे एजुकेट करना चाहिए। उनको जो है ऐसे प्रोफेशंस में कभी मना नहीं करना चाहिए कि ओ नहीं तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद शादी करना है। सो ये वाली जो सोसाइटी में जो स्टिग्मा है, जो टैबू है, इसको भी हमें थोड़ा-थोड़ा करके जो है वो ब्रेक करना है। अगर मर्दों को ये सिखाना है कि अग्रेसिवली बिहेव नहीं करना है, अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से चैनलाइज़ करना है, तो औरतों को भी ये सिखाना है कि हर चीज़ आपकी गलती नहीं होती। हर चीज़ जो है यू आर नॉट एक सेल्फ ब्लेमिंग वाली चीज़ और जो सोसाइटी में लड़कियों के साथ होती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम औरत हो ना तो इसलिए ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। ये हमें थोड़ा-सा रवैया अपना बदलना पड़ेगा एंड आई थिंक हमें हमें अपने घरों से, अपने बच्चों से, अपने nieces nephews से ही शुरू करना पड़ेगा इस चीज़ को। एंड honestly speaking, one more thing that I'd really like to add is कि we need more professionals in this field to be very honest because ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड जैसे कि आपने कहा प्लेटफ़ॉर्म्स जो है वो आपको रिलेटिवली इतना ईज़ी तरीके से नज़र नहीं आते। डॉक्टर सना, यू वर्किंग ऑन समथिंग ग्रेट। I've Thank you. also started my, I'm a mental health influencer, so I really raise awareness about topics like these because I really want people to know as to Yeah. why they're suffering from things, let it be men or women. But like is professional may I would actually urge people to take part in this profession and actually come and become psychologists, become psychiatrists, and relevant ones, please, not the ones जो बस ऐसे ही बैठे बैठे बन जाते हैं because like ये सिर्फ बातों का इलाज नहीं होता है, it's actually much much more than that. So yeah, that's what I'd like to say. एक्चुअली मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डॉक्टर सहर और डॉक्टर सना से करना चाहती हूँ कि अगर हम जेंडर वाइज नहीं होते, लेट्स सपोज मैं अगर मेल्स को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो डेफिनेटली जो मेंटल इश्यूज हैं वो मेल्स और फीमेल्स इक्वली फेस करते हैं। फीमेल्स में रेशो बिट हाई, बट मेल को भी मेंटल या या जो है ट्रीटमेंट और हेल्थ के इश्यूज हैं। सो बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि आप हमें मुझे ये बताएं कि एकेडमिक लेवल पे जैसे कि हम इस हेल्थ साइंसेस में कोई डिग्री कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि हम बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? और डॉक्टर सना से मेरा ये क्वेश्चन है कि मेल अगर क्योंकि उनके लिए दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो एक ही हेड है और वो फैमिली को देख रहा है और इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स टू सर्वाइव विद द फाइनेंशियल कंडीशंस एंड अदर इश्यूज जो कि उसे वर्क प्लेस पे होते हैं, तो इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? बिकॉज वो तो किसी को शो भी नहीं कर सकता, लाइक फीमेल समटाइम्स शो देयर मूड्स, मेल भी कर लेते हैं बट कुछ मेल आर hesitant to share their problems. तो आप काइंडली इसका भी आंसर करें। Just should I answer? You Yes, please. And Yes, then, please. just I'm not totally disagreeing or I'm not favoring the females. I'm just talking about currently जो हमारी सोसाइटी में issues हैं, उसके point of view से बात कर रही थी कि एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और अगर आप उसमें लिटरेचर में भी चेक करें तो फीमेल्स आर सफरिंग मोर। अभी जैसे आपने खुद भी कहा रिलेटिवली नहीं, इसका परसेंटेज का डिफरेंस है इनके बीच में कि अदर देन दिस हम हेल्थ इश्यूज भी कह सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट कीपिंग इन व्यू आर जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त करंट सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही थी कि एक अगर हरासमेंट हो रही है कुछ इस तरह, तो फीमेल्स कांट शेयर इतना ओपनली। हमारे वी आर नॉट अलाउड टू शेयर। जैसे मैं एक जनरल बात करूँ कि बच्चियों के केस में भी हमें देखना पड़ता है, स्टूडेंट्स जैसी होती हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोगों के यहाँ एकेडमिकली जो अभी करंटली जैसे अभी ने कहा है कि आई एम रियली इंटरेस्टेड और मैं बहुत एक्टिवली इस तरह के काम भी पर्सनली जो अपने लेवल पे हैं वो करती रहती हूँ। और आई हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स भी। आई ट्राइड माय बेस्ट जो हमारी एकेडमिक पॉलिसीज से कॉन्ट्रडिक्ट ना करती हैं, और जो पर्टिकुलरली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इस पे तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने काम भी किया है। और हमने अपने जो फैकल्टी है इसमें इस तरीके से कि हम लोगों ने एडवाइजर्स भी किए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स दे कैन कम एंड दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स।
एज वेल एज अभी लास्ट 2 ईयर से हमारी यूनिवर्सिटी में एक इन्होंने कंसल्टेंसी सेंटर बनाया है जो स्टूडेंट्स के लिए भी है, वर्कर्स के लिए भी है और फैकल्टी के लिए भी है. So they have the designated times. They can walk in or they can discuss their issues. और वहाँ पे उन्हें complete जो psychology department है वहाँ से उन्हें complete help दी जाती है. अब किस हद तक बच्चे इसको follow करते हैं, मैं आपसे एक ना छोटा सा वाक़या इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ. Although it doesn't look good, but it was like that कि being a female in most cases I used to be called अगर इस तरह का किसी female का issue होता है. So I came across, I have been called and I have been asked कि there is some female student और जिसको कुछ इस I'm not saying something कि मैं इसके against हुई या नहीं, उसके साथ health issue ये था, she started yelling in the class or something like that and it was जो as पर वहाँ पे एक chaos सा create हो गया कि उस लड़की पे जिन या कुछ इस तरह के issues हुए. And that was really surprising and it happened 1 to 2 times और उसको I have been appointed to counsel her and ये मतलब it's been a पूरा process and ultimately what kind of result was उसके घर वाले भी उसका मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट भी अजीब व गरीब उसकी बॉडी पे निशान या जो भी होता है. मैं आपको ये चीज बता रही हूँ हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह की नहीं, लेकिन जो बच्चे आते हैं वो डिफरेंट फैमिलीज से होते हैं ना. अब उसके जो पर्सनल इश्यूज थे वो अपनी जगह पे थे, उसके साथ कुछ हार्मोनल इश्यूज भी थे जो लेटर स्टेजेस पे उसको हम लोगों ने गाइड किया, उसको साइकेट्रिस्ट के पास भी और उसके साथ साथ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उसका विजिट भी. उसकी फैमिली किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं थी बट एट लास्ट वर्किंग के बाद आफ्टर 6 मंथ शी वाज एबल कि वो वापस उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और उसकी वो जो सारी चीज़ें थी वो रिजॉल्व हो गई क्योंकि घर में भी उसका अलग से प्रेशर था, फादर उसके थे नहीं, भाभियाँ और ये सारा कुछ. तो ये इस तरह की सिचुएशन में कि भाई सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे और उसको बहुत सफ़र. तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही थी कि नो डाउट मेल्स भी हमारे यहाँ उतना ही सफ़र कर रहे हैं जी जी. बट अगर हम रेशियो देखें तो वो ज़्यादा है. ये okay, we have to conclude as well because everyone have their own business. So Can yeah, yeah, can I please. add something? Okay, so I think every one of you covered almost everything like that I wanted to say, and you all did like it in a very beautiful way. Rabia, Misha, Sadar. मुझे कुछ चीजें लिखनी चाहिए थी जो मैं add करना चाह रही थी. But whatever I remember, I just add up to whatever you guys had to say. So, Rabia, you said कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to not feel alone when we are going through a certain, a phase or a situation. और उसके लिए knowing कि we're not alone, every other person is going through it one or the other way. And I completely agree to you. I think कि पाकिस्तान में support groups और group therapy की बिल्कुल भी awareness नहीं है. I have tried to like make sort of a few groups, लेकिन वो उसका feedback इतना नहीं था कि जिसपे like we could actually go on with like I mean उसमें वो depend करता है. It can be with a certain topic where like loss of loved ones or whatever you want to deal with, or like general भी हो सकता है. Because I've experienced support groups myself. I think it's a beautiful experience to feel connected and like heal yourself with others. Secondly, I wanted to say that anxiety में breathing exercises बहुत ज़्यादा help करती हैं to calm yourself down, because they help you bring you in the moment and relaxes the body. So add yoga or breathing exercises in your daily routine. That helps. Secondly, I've also done my EMDR EMDR certification जिसमें trauma based therapy होती है. So अक्सर चीज़ों में psychotherapy helps, but I personally have experienced कि कुछ जगहों पे where I felt stuck, EMDR therapy is a bilateral stimulation therapy जिसमें basically आपके brain में आपका मसला भी होता है और उसका solution भी होती है. They can't connect. So EMDR helps you connect those through bilateral stimulation, and it actually changes your negative emotion into a positive thing. So that is helpful for whoever or especially abuses के cases में देखा कि बहुत helpful है. Another thing I wanted to add is that I work on spiritual healing as well. So उसमें हम जो हमें मसले लाइफ में होते हैं उसमें once we know ourselves, and we know our patterns, it's easier knowing other person's patterns too. We are able to give benefit of the doubt to the other person as well. Okay, why does a person behave the way he does? And apart from that, and ये सारी हम ये बात इसलिए करें ताकि we try to become a better version of ourselves. So it's important to know your purpose and have a meaningful life.
So uske liye, once you know yourself better, you connect yourself within, and then you connect yourself with the Almighty, and that gives you a very fulfilling feeling. I work with Allah ke naam, the divine names, and I've done it with clients, and they are powerful. So look into that too. However, you can connect to God. It's very impactful and it's very powerful. And everyone has like a different purpose in life. So, once you're connected to yourself, you can be aware of what your purpose is. And yeah, I this is agree with just you on wanted the to add. spiritual part. I agree with you on the spiritual part since I also believe in that, and then that has also, I don't know that it has helped my therapy, but then it has helped me in my personal life to know me as a person, and then it keeps me grounded. So I agree with you over here. Thank you. Okay, so I think it was a healthy talk, and once again, I would like to thank to all of you. Anybody like to share anything at the end? So then I will conclude. No, I just wanted to Yeah, thank you please. for inviting me and connecting with such wonderful people. I really enjoyed every insight that all of you, each one of you had to add. And it's been a pleasure being here and getting to hear and listen to you guys. So yeah, and thank you, Ali, for having me here. Always Yeah, thank you welcome. so much Thank for you so having much. us. Absolutely, yes, Ali. I completely resonate with what Dr. Sana said. It was a pleasure for me to meet everybody and to actually talk about this particular thing that I really hold closely to my heart. So thank you so much. Thank you, Ali. And it was really interesting, and I learned a lot. And I think, I hopefully I will be in contact with all these people, get more knowledge and get more Yes. insights. And I would also like to share that I and Dr. Sanam, we value good relationships. So we strongly believe in building our social capital. So that's why Dr. Rabia and then Dua and then Dr. Uh, Sarah and then Ali, thank you for inviting us. And then let's just stay connected to have more talks like this. Thank you. Thank you so much. Thank Yeah, I please. wanted to add thank you so much, Ali, for putting all the efforts that you do all the time for, like, making us meet all these beautiful people. And like you just said, Misha, let's stay connected. And yeah, let's switch numbers and diversify our mission, basically. No, no, absolutely. I agree. We must stay connected because, we are a community of people, individuals who are motivated towards bringing a change and creating a better change. So, we must share that purpose and we must stay connected. Yeah, 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 yeah. Exactly. I would Thank. also like to add one thing that through this platform we should collaborate something more in future. Yeah. And I once again like to thanks all the guests and especially Ali for arranging such a event for this awareness session. And I would like to especially thank to Dr. Dean Trust that please like generations are based on. Future are based on generations. So please try to involve HEC and other academic partners to collaborate on such issues. Thank you so Thank much. you. Yeah. Inshallah. या बिकॉज द पर्पज़ ऑफ माई ऑल दिस एफर्ट के हम बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग होते हैं उनके डिफरेंट स्नैरियोज होते हैं लाइक आई ऑलवेज इनवाइट डिफरेंट स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज और द बेसिक जो ये स्टार्ट करने का मेरा था ये इसमें व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन माय अंडर ग्रेड डॉक्टर सहर के साथ ही और जो पेन बट आई फील कि मैंने जब हेरासमेंट और इस तरह की कुछ चीज़ें देखी अपना फीमेल्स के स्नैरियो में देन आई थॉट कि मुझे एक प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाना चाहिए और इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑल्दो इसमें बहुत सारे हार्ड एक्सपीरियंसेस भी हैं लाइक इन माय पर्सनल कि जब मैंने फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट किया बट अच्छी फीमेल्स भी बहुत सारी हैं जो दे ऑलवेज सपोर्ट एंड ऑल दे ऑलवेज लाइक टू बी helping. So thank you so much all of you once again. I am very thankful to our chief guest Dr. Sahar Fazal and also especially Dr. Sanam and Dr. Sana के मैंने कुछ दिन पहले भी उनका एक सेशन था एक डॉक्टर साहब के साथ मैंने वो भी सुना डेट वॉज वेरी इंटरेक्टिव एक्चुअली उसने ही मुझे इंस्पायर किया कि मैं इनको पहले से Thank you. नहीं जानता था सो आई इनवाइटेड हर एंड Okay. ऑल्सो मिशा इरशाद शी डिड coordinate very well and also in my organizing team Miss Rabia Najeeb she is already popular in our making digital content for the therapy
And also at the end, Miss Rabia Khalid, she is a passive psychologist. इनके साथ 2-3 साल से मैं मुंसलिक हूँ, लेकिन बहुत कम ये एक्टिव होती हैं, but he always cooperate and behave well. And our team member Rabia Khan, thank you for coordinating. And इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम सेशंस करेंगे. और आई वुड लाइक टू इनवाइट मोर मेल्स ऑल्सो, कि तो हमारी सोसाइटी में मेल्स की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन होती हैं, एंड दे समटाइम वो भी शेयर नहीं कर पाते. लाइक डॉक्टर सैर सेड के फीमेल्स नहीं कर पाती, बट आई थिंक मेल्स के भी ऐसे हैं जो वो नहीं कर पाते, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ों नहीं, का. आप बिल्कुल सॉरी टू कट यू, आप ये ज़रूर करिएगा ये बिकॉज़ आई एग्री कि बहुत बात होती है ऑन फीमेल्स एंड उनकी चैलेंजेस पे, और बहुत कम बात होती है. तो मेल्स who feel out loud and a bit, cast out. So it's important that attention is brought to, males as well. Yeah. Okay, thank you so much for all of you once again. Inshallah, next time we will meet again. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you.